गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एरर करेक्शन देखेंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो है ऑन स्पॉट द एरर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब जैसा हमने कहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है माय सिस्टर, सो दैट इज करेक्ट। ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। हैज रेड, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हैज इज सिंगुलर वर्ब, सो हैज के साथ V3, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, बाइबल के जो पेज पे पेज मेरी बहन जो है पढ़ती है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस हैज रेड मतलब उसने पढ़ लिया है। मेरी सिस्टर ने पढ़ लिया है कई सारे पेजेस, अनेक पेजेस पढ़े उसने बाइबल के। तो दिस मेनी पेजेस के टर्म्स में हम कह सकते हैं, बेसिकली ये मीनिंग है मेनी पेजेस। दे हैव यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेजेस आफ्टर पेजेस। अब यहाँ एक चीज सीखने की चीज है, इधर अटेंशन दीजिए आप लोग। दिस इज आफ्टर, दैट इज अ preposition। अब preposition के पहले जब सेम नाउन पहले और बाद में रिपीट करें, सेम नाउन और बीच में वो कनेक्टेड हो एक सिंगल प्रीपोजिशन के, ऐसे में नाउन्स कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते हैं। पेज इज सिंगुलर एंड पेजेस इज प्लूरल। अगर प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन नहीं यूज कर सकते हैं। दैट हैज टू बी backed up as well as at the initial position also it has to be singular, यानी page after page, ये सीख लेना है। अगर प्रीपोजिशन से वो कनेक्टेड हो तो ये सिंगुलर होगा। सो आवर मिस्टेक लाइज ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. I subject, went, V2 main verb। went के बाद हमेशा go के बाद preposition to लगता है, so that is correct। I went to, the object is the temple, so this option is totally correct। I went to the temple with, किनके साथ हम गए? with my parents, मम्मी पापा, aunts, that is uncles and aunts। cousin sisters, when you talk about your cousins, cousin is singular, cousins is plural, this is plural। Now cousins could either be sister or it could be brother, but when you say cousins you cannot add cousin sister or cousin brother, it has to be used only as cousins। सिर्फ cousins बोलना है, उसके साथ brothers and sisters नहीं ऐड करना। So the mistake lies over here। You cannot say this, you have to delete this, so your option is C। Third question, he takes pain over his work, so this is your subject, takes is your verb, pain is your object। Object has to be, I said, either noun or it has to be pronoun, so he takes pain। Pain is a noun and pain का मतलब होता है वो दर्द लेता है, that is it is paining। हम कहते हैं ना, अगर हमें चोट लगी, I got hurt, मुझे चोट लगी and it is paining, that means I am having trouble, I am having pain, it is hurting। But when you use pains, it means with a lot of efforts, hard work, वो होता है पेन्स। तो जब हम काम करते हैं तो हम दर्द नहीं लेते हैं, हार्ड वर्क करते। सो इट शुड हैव बीन ओवर हियर, दिस शुड हैव बीन पेन्स नॉट पेन, सो दिस इज रॉन्ग। योर आंसर शुड बी पेन। दिस सर, एक एस लगने के बाद कैसे हमारा मीनिंग चेंज होता है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस।
The manager put forward a number of criterions for the post. Subject, put forward is your phrasal verb. उन्होंने रखा. Put is just to keep. Put forward किसी के समक्ष वो चीज रखना. So this becomes your main verb with the combination of prepositions. So it becomes a phrasal verb. A number of means कई सारे. This portion is correct. This portion is correct. Now criterions why for the post. उस पोस्ट के लिए ये चीजें हमें चाहिए. So ये सारे हो गए actually criterion number 1, 2, 3. Plural of criterion is criteria, not criterions. So this is mistake over here. A number of criteria this guy had put, that is manager ने इस पोस्ट के लिए उसके समक्ष रखा. इसके मैनेजमेंट के समक्ष, हायरिंग मैनेजर के पास कुछ भी हो सकता है. So your mistake lies over here. Number B. Fifth question. I like the poetries of Byron and Shelley. So these are the poets. They are poets. दो poet के नाम लिए गए. I is a subject. Like I के साथ plural verb लगता है because it is an exceptional subject. So this becomes your verb, verb 1. I like what? The poetries. कविताएं. What they are saying? They have written many poems. So basically poem का plural होता है poems. Poetry का कोई plural नहीं होता क्योंकि poetry always remains poetry. In singular also it is one poetry, it is many poetries. So this cannot be poetries, it has to be poetry of these two poets. So your answer has to be B क्योंकि इसका तो plural होता ही नहीं है. Number 6, the beautiful surrounding of this place enchanted me. The beautiful adjective. Up, this is actually subject, this entire thing, the beautiful surrounding. This is your subject because the noun is surroundings. Of the place enchanted me, this is the verb enchanted me जो मोहित किया. So ये हो गया verb. I का objective form is me. So this has become object. That is also correct. Enchanted me is correct. Beautiful is correct. So suppose this is a place and the surroundings is this. So this is, it is surrounded by. But when you talk about the peripheral existences, वो क्या क्या चीज से घिरा हुआ है, हाँ ये waterfall देखने का है, ये park देखने का है. So there is a botanical garden over here. They are surroundings. They are called surroundings. उनके चारों ओर क्या क्या चीजें हैं जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट की तरह काम करते हैं. So the beautiful surroundings of the place enchanted me. That really impressed me. I became very happy seeing those places. So this is wrong. This has to be backed up by surroundings. Your answer has to be B. No porter being available, he carried all his luggages himself. So there was, now see, actually subject and verb बीच में आया है. Reason, this is a reason given. He carried all his luggages himself. उसने अपने सारे सामान खुद ढोया. वो क्यों? Because कोई भी उसे कूली या हेल्पर नहीं मिल रहा था. Being available is नहीं मिलने के कारण. The meaning is because they were not available, nobody was available around. So this is correct. Being available, because this is not a verb, this is a part of the sentence, that is phrase. Because of this, he had to carry all the luggages himself. So he carried, he is subject, carried is V2 as the main verb. All his luggages cannot be the correct word.
क्योंकि लगेज का प्लूरल इज जस्ट लाइक पोएट्रीज, लगेज का प्लूरल इज लगेज। बेसिकली ये जो सेंटेंस एरर है ये नाउन पे बेस करके है। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सेट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ नाउन। So we are learning how to rectify, how to have a sound knowledge on the noun. उसमें आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब का एप्लीकेशन तो मैंडेटरी आएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट वर्ब का नहीं आता। अब सब्जेक्ट या तो रोल प्ले करेगा या ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा नाउन का। सो बेसिकली एरर्स इधर घूम रहे हैं। सो वी हैव सीन दैट इन द 7th क्वेश्चन एक्चुअल द प्रॉब्लम इज द मिस्टेक लाइज इन नॉट लगेजेस, it has to be luggage. Number 8 क्वेश्चन में जाते हैं, the table's leg have been elaborately carved. So carved is वो फर्नीचर में हमारा जो आर्टिस्टिक फिनिश होता है, दैट इज बहुत अच्छे से कर्वेचर किया गया है। अब एक एक करके देखते हैं। दिस इज सब्जेक्ट टेबल्स लेग, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। टेबल के जो लेग्स हैं उस पर सपोज दिस इज अ टेबल and it has its legs and the curvature has been done over here artistically. So tables legs के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो plural है। We have picked up plural verb. Now have been क्यों दिया है? This is a passive sentence because ये curvature तो कोई और करके दे रहा है। अगर कोई और करके देता है तो फिर उसके साथ been लग जाता है। So they have been done what? Been, अगर have been लगा तो यहाँ पे मेन वर्ब V3 लगता है। Carved means इसको बहुत अच्छे से engravings किए गए हैं, वहाँ पे आर्किटेक्चर को फिनिश दिया गया है। elaborately means very deeply, very intensively से कार्विंग की गई है। अब किसकी कार्विंग हुई है? लेग्स की। लेग्स किसके थी? टेबल्स के। So this is an application of apostrophe. Apostrophe, that is legs. So table is a non-living thing. Non-living things के generally apostrophes नहीं होते हैं। Apostrophe living things के होते हैं। Like अगर यहाँ boys legs होता तो acceptable होता, but because table is a non-living thing, we will not accept apostrophe in case of this. So this table's leg is a mistake over here. We have to use it in the form of the legs of the table. So your answer is 8. Number 9, the sceneries of Kashmir is very charming. This is your subject. Singular है, so this is verb is very charming, adjective predicatively end कर रहा है sentence को. So what is charming? Actually जो scene है कश्मीर का वो scenery is the acceptable word. That is the correct word. Scenery can never be converted into sceneries. Sceneries is wrong. Poetry is wrong. Luggage is long. Furnitures wrong. ये वर्ड्स एक्सेप्टेबल है ही नहीं। सबका सिंगुलर वर्ड होता है, दैट इज सीनरी, पोएट्री, सीनरी, पोएट्री, luggage. Even if you have 5 luggage, all the furniture were thrown away. Furniture, ये सभी सिंगुलर रहते हैं हमेशा। That you have to remember. Okay, so with this we finish this video. We'll bring more errors for you in the subsequent videos. That's all for today.